Welcome to this conversation we are having at the Observer Research Foundation as part of the series of digital conversations we have been doing ever since the lockdown began. Today we have with us the national co-convener of Swadeshi Jagran Manch, Professor Ashwani Mahajan. He has been pushing for reforms, economic reforms from a different perspective, from the Swadeshi perspective. And I thought it would be good to catch up with him and check out his views on the impact which the COVID-19 pandemic has had on the global economy, on the national economy, and the prescription which Swadeshi Jagran Manch has in mind for the government of India once we move into the post-pandemic phase. Welcome, Professor Mahajan. It's very kind of you to give us the time for this discussion. Let's begin with your perception of the kind of impact the COVID-19 pandemic has had on the global economy, and what kind of a damage will it cause globally? See, most of the people are, they are being compelled to stay at home. Economic activities have more or less stopped. People are losing jobs. Factories are closed. Offices are closed. Almost even social activities are stopped. And we understand that what you call the circles, the cycles, they have themselves got disturbed. So हम ये कह सकते हैं कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है एक तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुई है और आमदनियां भी घटी हैं। न केवल लोगों की आमदनी घटी है, सरकारों की आमदनियां भी घटी हैं और दूसरी तरफ सरकार के जो जिम्मेवारियां हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं। अब पहले लोगों को खिलाने के लिए सरकार को कोई सोचने की जरूरत नहीं थी, आज सोचने की जरूरत है। लोग कोई भूखा ना रहे, चाहे वो भारत में है या अमेरिका में, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। कोई बीमार हो जाते हैं और यदि चाइनीज वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो उसको ठीक करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। यानी कुल मिलाकर के सरकार की जिम्मेवारियां बढ़ गई और सरकार की आमदनी घटी। दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रभावित होने के कारण जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनकी भी पूर्ति नहीं हो पाती है। और एक पिछले 30 सालों में एक ऐसी दुनिया बन गई थी कि हर कोई दूसरे पर आश्रित हो गया था और डिपेंडेंस इतनी ज्यादा थी कि अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं कि उसको पीपीई किट्स बनानी पड़ेंगी या मास्क बनाने पड़ेंगे या फॉर दैट मैटर उनको वेंटिलेटर्स बनाने पड़ेंगे। भारत ने भी ऐसा विचार नहीं किया। आप सामान्य तौर पर लोग कहा करते थे कि क्या जरूरत है इन चीजों के बारे में सोचने की। जो वो हमारा पुराना जो सनातन सोच है कि जो स्वदेशी की सोच है, जो महात्मा गांधी की भी सोच थी कि हमारे पास एक सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। यानी जो जरूरतें हम अपने देश में पूर्ति कर सकते हैं, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने स्टेट में, अपने देश में, तो उनकी उसी स्तर पर पूर्ति हो जानी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं था। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। तो अब ये जो पेंडेमिक आया उससे लोगों को ये ध्यान में आया कि सेल्फ रिलायंस जो है वो बहुत जरूरी चीज है। यानी एक बहुत बड़ा बदलाव, यानी एक तरफ हम इकोनॉमीज में बदलाव देखते हैं और दूसरी तरफ सोच में बदलाव देखते हैं। चाहे वो भारत में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा सबक इस वायरस से आया है वो ये है कि हमें अब सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूँ कि आर्थिक गतिविधियों के बदलाव के साथ साथ सोच में भी बदलाव आया है। तो ये मैं ग्लोबल लेवल और भारत के लेवल पर जो कुछ बदलाव आया उसके बारे में मैं कहना चाह रहा था। So what you are referring to is that
country after country is now thinking in terms of economic nationalism, about raising barriers, about moving away from a globalized economy towards a nationally contained, geographically contained economy. I will come to that point in a while. But if we look at the Indian economy, it is a given that the pandemic and the lockdown was something which the government could not have avoided. Both together will have a huge impact on the national economy. How do you think, or what do you think are the three steps that the government should take in the short term to get the economy going once again? Reopening the country to business, to trade, to commerce is one thing, which will happen. But after that, what are the three things that the government should take in the short term to get to refuel the economy, to get it going once again? जी, मैं समझता हूँ कि हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के मेजर्स में हो सकता है कि ओवरलैपिंग भी हो, लेकिन हमें वो मेजर्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहली तो बात ये है कि शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली हम क्या करें। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब शहरों से गांवों में चले गए हैं और कुछ लोग शहर में बचे हैं। जो बचे हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, और किसी भी हालत में वो रोजगार उनको मिलना ही चाहिए। अधिकांश यदि आप देखें तो बड़ी कंपनियों में भी लोग लगे हैं और छोटी कंपनियों में भी, और छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री में भी लोग लगे हैं। जहां तक बड़ी इंडस्ट्री का प्रश्न है, हमने बहुत इसका अध्ययन भी किया है कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, दे आर सिटिंग ऑन ह्यूज कैश, सो देयर इज हार्डली एनी प्रॉब्लम of them being financing or making payment on salaries to their employees. लेकिन जो छोटे लोग हैं, उनको सबसे, जो माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनकी सबसे बड़ी समस्या पहले भी, पिछले बहुत लंबे समय से जो एनपीए की समस्या चल रही थी, उसके कारण भी बैंकों ने लोन देना कम कर दिया था बेसिल नॉर्म्स के कारण, वो भी एक कारण था। लेकिन अभी जो फिलहाल जो प्रॉब्लम आई है कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी जो है, वो बहुत अफेक्ट हुई है। तो इसलिए वो अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनको उद्योग चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो बहुत जरूरी होगा। तो ऐसे में हमारा ये मानना है कि सरकार को इस स्तर पर अर्थव्यवस्था को एक जिसको हम कहते हैं ग्रीजिंग करने की दृष्टि से एक काम ये करना पड़ेगा कि उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करें। और वर्किंग कैपिटल कैसे प्रोवाइड करें? क्योंकि सरकार हो सकता है कि 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपया इसके लिए लगाने के लिए तैयार हो, तो वो कैसे लगाया जाए, ये बहुत जरूरी है। तो वो इस तरह से लगाया जा सकता है कि हम उनको विदाउट इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे दें। तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स अगर हम देते हैं तो उसका एक सबसे बढ़िया असर ये होगा, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बहुत लंबे समय से चल रही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उससे क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल उनको मिलेगी और जो इंटरेस्ट देने की जो जरूरत है वो नहीं होगी। तो इसके कारण वो आसानी से अपने उद्योग को दोबारा से चलाने में सक्षम हो सकते हैं। जो बड़े उद्योग हैं उनको हमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड सब्सिडी देनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट लिंक सब्सिडी का मतलब यह है कि अगर वो 20 लोगों को रिटेन करते हैं तो उनको इस प्रकार से सब्सिडी मिले, 40-50 लोगों को रिटेन करते हैं तो इस प्रकार से मिले। तो उससे क्या होगा कि हम, जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, अगर एक बार हमने सब लोगों को रोजगार में रख दिया और वो दोबारा से चीजें रोटेशन में आ गई, तो वो जो साइकिल जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स की जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, वो एक बार दोबारा से स्थापित होगा। ये मैं समझता हूं कि शॉर्ट रन में, तो इमीडिएट शॉर्ट रन में सरकार का ये योजना होनी चाहिए। Coming to the micro, small and medium enterprises, they are easily the worst hit. How
apart from, say, like you suggested, interest-free loans to get them working capital, to get cash back into the market. But beyond that, any measure which the government can take to sort of ensure that these do not shut down? See, in the last few years, the government has, come out with various plans to sustain and to promote and to support small-scale industries and the domestic industry. One major step was Rule 153.3 under the General Financial Rules, under which the government decided to make all government procurements up to 50 lakhs of rupees from the domestic producers. So whether small or big. So normally the government was making procurement from these small people and up to 50 lakhs, and beyond 50 lakhs it was an advantage of 20% in price. So that was, and that can be further improved. And recently the Home Ministry decided to make purchases of their dresses, their uniforms, from only the khadi and micro enterprises for their uniforms. So such kind of support from the government, because government is a big purchaser. So such kind of support from the government can really help a lot in sustaining these enterprises. And also, you see, little bit of small helps, like in their electricity bills, they should be charged on the usage basis, not on the slab basis. So all that small things, both the state governments as well as the central government, they have to come together to help these people to really continue with this. Now, if we look at the post-COVID scenario, and as it is now more or less a given that America will look at a different kind of economic arrangement. Europe will look at a different kind of economic arrangement, and they will want to reconfigure, realign global supply chains. Meanwhile, a lot of companies want to relocate from China to other places. And the government has now sort of tried to convert this challenge into an opportunity by preparing to welcome companies to relocate in India. We are offering them land, we are offering them other facilities. The government of UP is making a big push for it. The government of India is making a big push for it. Niti Aayog is into it. Does the Swadeshi Jagran Manch have a view on foreign companies relocating to India? See, normally, generally speaking, Swadeshi Jagran Manch is against any kind of foreign investment. But our bottom line is that, see, we can welcome also the foreign investment, provided it gives us employment and it gives us foreign exchange. Foreign exchange not in terms of the these companies coming in bringing foreign exchange, but the long-term earning of foreign exchange which can happen. You see, so there are we have been telling the government, yes, we can welcome these companies, provided that they export, because all these companies, those who are working in China, basically they are exporting from China, exporting out of China. China is no market for them. So if they can make exports from China, they can make exports from India as well. First condition is that you see, and this is not a new condition. Countries all over the world, while welcoming foreign investment, put this condition of export obligations. And second obligation is your domestic procurement, domestic content requirement. You see, in most of the countries, they put condition of 50%, 70%, 30% domestic content requirement for their production. The third condition is that, you see, and these are all reasonable conditions. Third condition is that today, these multinational companies take away around
$20 billion from us in the name of royalty and in the name of technical fees. So that there has to be a cap on that, and they should not be asking us the royalty for the technology they are bringing in. So if these three conditions are met, and Swadeshi Jagar Manch is all for welcoming these companies if they are exporting, if they don't ask for royalty, and if they meet with the domestic content requirements. And lastly, what I would like to know from you, do you or would you suggest that India should revisit its economic relations with China in terms of Chinese investments in India, in terms of imports from China? After all, I mean, I personally believe that there should be an element of punishment in how the world responds to China after, we have got back to our lives and whatever the new normal will be. I'm happy that you are saying so. That's my personal view. Yeah, I'm happy. I'm happy that you are saying that we should punish China. In fact, you see, China has been doing wrong things right from the very beginning. So pandemic is the latest one. Otherwise also, since 2001, when China entered into WTO, they started making misuse of WTO. You see, they knew that in WTO, the tariffs are lower and they can easily sell goods. And everybody knows that China is not a market economy. Everybody knows that there is an iron curtain. Everybody knows that they give huge amount of subsidy to their exporters, and therefore they are able to dump goods. But policymakers all over the world, I'm not talking only of India. India, they were extremely bad, the policymakers in this context. And even in US, even in Europe, they continued with welcoming Chinese imports. But you see, there is a problem. Ashwini, there is a problem. It's very easy to blame policymakers and the government. The problem is also with the consumer. After all, the Chinese boom happened because world over people wanted cut price goods. They wanted cut price services. And what China was giving for 50 paise, it would have been 1 rupee or 2 rupees if we had produced it domestically. So, we have to keep that reality in mind also, that consumers will always prefer something which is cheaper, something which is available in large quantity. And China excels in that. That is the big strength which China has. I am... अपने यहाँ का जो दिया था, हम दिवाली का दिया, दिवाली का लक्ष्मी गणेश का statue, we outsourced it to China. What you're saying is the general argument in favor of cheaper imports. And this argument has been continuously being given by those who are favoring free trade. But I tell you one thing, as a student of economics and as a student of WTO related issues, I know for certain that in WTO, we have the capacity and we are allowed to have on an average 40% tariffs on an average. So if we can impose 40% taxes, that is to basically, when WTO was signed, and obviously WTO was signed with all those big free trade arguments. Even in the WTO, we were given the allowance to impose on an average 40% tariffs. But why I'm blaming the governments? Because they continuously started decreasing the tariffs. And what they did in the name of free trade, that's what I'm saying. I'm not talking of the Indian government only. I'm talking of even US others. So what happened by reducing the tariffs, they allowed the dumping in India and elsewhere happen, and that resulted into the decline and even the
decline of domestic industry and deindustrialization everywhere. It's not just in India. In US, no industry is working. In Europe, many of the industries are closed. So, and in India also, you see, we were aspiring to become the manufacturing hub. But what happened? We were producing about 17-18% of the GDP in manufacturing. We came down to 15 to 16%. So, the employment can happen not in agriculture, we know that, not in services, we understand that. So it can happen only in manufacturing. So if you want to give employment to the people, so the manufacturing is the only way. But we deliberately kept on reducing tariffs, and this realization happened about 2 years ago when government in February 2018 in Arun Jaitley's budget, government decided to raise tariffs on electronics and mobile phones, and that led to the stoppage of imports from China to a great extent. And you'll be surprised to know, and if I take your present opinion in terms of the past, you will see that $63 billion of balance of trade deficit with China turned into $53 billion of trade deficit. So our trade deficit declined in just 1 year by $10 billion, whereas it was increasing by $10 billion every year. So that was happening. So that is one thing. We can come up with barriers, but can we stop China from investing in India? Is that desirable at all? Yeah, you see what happened. We were listening to various news coming in from Europe that China is trying to take opportunistic takeovers in Europe, and in that context, a news came. Then in HDFC Bank, China raised its stake from 0.8% to 1-point-some%. So it was about 0.3 or 0.4% increase in HDFC's, your People's Bank of China stake. So I made a tweet that we should not tolerate this, because if this happens and if this continues, then given the declining prices of the declining share prices, we may suffer, because our companies, well-run companies, may be taken over by China. So then I think within 2-3 days of that happening, your HDFC Bank's stake hike, news coming in. Within 2-3 days, government came out with the change in the policy. और ये कोई हम लोगों ने रोका नहीं है चाइनीज इन्वेस्टमेंट को, हमने सिर्फ उसको ऑटोमेटिक रूट से हटा करके गवर्नमेंट अप्रूवल के रूट से लेके गए हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना जब when US can do it, when Europe can do it, वो तो इतनी दूर बैठे हैं, 7 समुंदर पार बैठे हैं. हमारे तो पड़ोस में है ये, तो हमारे तो स्टेक्स ज्यादा इन्वॉल्व हैं. इसलिए भारत के पास वो तमाम कारण है कि हम ये कहें कि हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, ये डिसाइड करने का अधिकार बाजार के पास नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड करने का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए. Ashwini ji, we are running out of time. I will just ask you one last question, and I will give you 60 seconds to answer that. A very quick response. How do you see Indian economy in the next 1, 2, and 3 years? Will we get back to where we were, or will we be struggling? मुझे लगता है कि हमारे लिए भविष्य बहुत उज्जवल है. उसके 2 कारण हैं. एक, हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट है, और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में जो नई समझ डेवलप हो रही है सेल्फ रिलायंस की, और उसके साथ ही साथ दुनिया भर की कंपनियां भारत में आकर के अपने प्रोडक्शन सेंटर शुरू करना चाहती हैं. तो हमारे लिए रोजगार
उपलब्ध कराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और एक बार हमने अपने युवाओं को रोजगार दे दिया, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब हमारे पास 2042 तक का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का समय है, मुझे लगता है कि हमें इस 22 साल के समय को पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए, सेल्फ रिलायंस को आगे बढ़ाते हुए, दुनिया में बदलते हुए परिदृश्य को और दुनिया में बदलती हुई सोच को और चीन के खिलाफ बदलती हुई सोच को हमें उपयोग करना चाहिए। चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब से डिस्प्लेस करके भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने और हमारे लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए हमारे लोग सक्षम हैं। हमारे पास युवा है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत के पास ज्यादा हैं बाकी शेष दुनिया से। Thank you, Ashwani ji. It was really a pleasure speaking to you. One learns a lot, and I'm sure we can only hope for the best when it comes to India and the Indian economy. And thank you, viewers, for watching this conversation. There will be more such conversations in the coming days. Do stay tuned in to the ORF channel. Thank you once again.